अल्लाह ने ये बनाया कि जो चीज नहीं है इंसान वही लेना चाहता है। गोरा काला हो रहा है और काला गोरा हो रहा है। गोरा कोशिश करता है वो काला हो जाए, वो सारा दिन सनबेदिंग करता है, और जो काला है वो छतरी लेके फिरता है और धूप से बचता है कि मैं कहीं और काला ना हो जाऊं, मैं गोरा हूं। इसमें अल्लाह ने एक बैलेंस क्रिएट किया है। जो गोरे, उनकी विटामिन डी ज्यादा बनती नहीं, बहुत बहुत सनलाइट भी, उनकी भी एक डेफिशिएंसी रहती है। एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हम सनलाइट से बचते हैं, तो हमारे अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। When I was a student and I was studying in MBBS, we were under this impression that vitamin D is abundant in every person in Pakistan because there's a lot of sunlight. But once papers started coming from all over the world, and especially from underdeveloped world, from Middle East, where there was a lot of sunlight, India, Pakistan, Bangladesh, we came to know that the story is totally different. We came to know that story is totally different, and there is a lot of vitamin D and calcium deficiency in Pakistan, and we have to replenish it. और उसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत डिस्कशन शुरू हुई, और ज्यादा डिस्कशन कब शुरू हुई? When there was a pandemic infectious disease COVID. जब COVID आया, then we came to know that these vitamins are very, very essential. Those people who had good levels of calcium and vitamin D, they did not get COVID. और जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम नहीं था, उनको कोविड ज्यादा हुआ। और फिर every patient who got COVID, please sit down so that there is silence in the hall. I request, please sit down. And if somebody else has to enter, please take seats. And gradually in COVID, this problem, we came to know that everyone was given prescription of vitamin D. So here we start. If you stay away from sunlight, you shun sunlight, you wear sunscreens, sunblocks. Our beautiful ladies who are sitting here, I think 90% of you apply sunblock, which is essential item in Pakistan. और वहाँ सन ब्लॉक ही लगाए जाते हैं। यूरोप में वो क्रीम्स लगाते हैं जो उनको ज्यादा डार्क करें और ब्लैक करें, तो एक डिफरेंस चलता है। Plus those who have milk allergies, I am 100% sure 90% of you do not take milk, because whenever I interview, there are very few girls who take milk. Maybe they take yogurt, but milk they do not take. And plus vegan diet, you take plant-based foods. This increases vitamin D deficiency. You see this kid? Milk drink, umbrella, vegan diet. Looks like some gate crashes coming to each. Vitamin D is not a vitamin actually. It is a hormone. जैसे इंसुलिन एक हार्मोन स्टार्ट हो गया, उस तरह विटामिन डी भी एक हार्मोन के तौर पे इसको अब एज्यूम किया जाता है। ये सिर्फ विटामिन डी नहीं है, ये एक हार्मोन है। कैल्शियम प्लस विटामिन, some vitamins are water soluble, some are fat soluble. First, I'll tell you the role of calcium: vascular contraction, vasodilation, muscle function, nerve transmission, intracellular signaling, hormonal signaling, and coagulation mechanism. Calcium is very important in all these things, so level has to be proper. There has to be optimum level. उससे ना ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो फिर भी उसकी एक टेक्निक और उससे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, and then it shows that where it is found. कैल्शियम एंड विटामिन को बताएगा कि किस चीज के लिए ज्यादा जरूरी है। Anybody from the crowd? सबसे ज्यादा we move around. You don't have. You go upstairs, come down. If you do not have vitamin D and calcium, you cannot walk. So if you are standing, अभी ये staircase लगा था, बड़ा dangerous लग रहा था. If you have good bones, you can go up easily. If your bones have become brittle, जो कि कोविड और डेंगू के आउटब्रेक के बाद हो गया, bones और muscles both got affected. So I think everybody should take calcium and vitamin D. So आपका जो overall bone structure है,
especially for women after menopause. This is very, very important. If you look after yourself now, then you will be fit at the level of 60, age 60 or 70. If you have not looked after yourself now, you are sitting inside, you're not taking any exercise, you're not moving around, you will get these deficiencies early. ये इसका लेवल है 800 विटामिन डी और 1000 कैल्शियम का लेवल और प्रेगनेंसी में 1300 है. एक चीज मैंने खुद भी इतना नहीं सोचा था. I was going through the literature and I was astonished. And I think all of you should go back and read it. हर illness, especially जो female की है, उसमें vitamin D का रोल है. In every illness of a female. और मुझे खुद भी नहीं पता था कि vitamin D इतनी हर चीज में essential है. Hypertension, diabetes, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome, obesity. Role of vitamin D in PCO. If vitamin D is less, insulin resistance increases. Insulin resistance बढ़ेगा, तो will ultimately there will be PCO and there will be metabolic syndrome. There is another school of thought which says that because of PCO there is vitamin D deficiency. अब हमने ये सोचना है कि हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी इतना कम क्यों है. इट इज बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. और उसकी क्या वजह? मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह दो चीजें हैं. डॉक्टर बीनस में एक चीज है कि हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, और दूसरी चीज ये कि हम शलवार कमीज पहनते हैं. जितनी आप रोटी खाते हैं, deposition of fat is on the abdomen. Abdominal fat is worst for your metabolism, for your heart, for your illness, for diabetes, for hypertension. और जब हम शलवार पहनते हैं तो फिर 4-5 इंच ऊपर नीचे आगे वेस्ट हो जाए उसका पता नहीं चलता. It's a very good dress. हमारा जो बढ़ता, अब हम नंबर 1 आ चुके हैं डायबिटीज में. And that is because of our dietary habits and sedentary lifestyle. We do not take exercise. Number 1, we take a lot of roti, and number 2, we wear shalwar kameez. हम Middle East से भी ऊपर निकल गए जो डायबिटीज में हमसे ऊपर थे. West वाले they wear a dress, they immediately know that waist is is becoming bigger and bigger. They immediately control. हमारे ड्रेस में पता नहीं चलता. And then receptors in IVF, vitamin D is very, very important for development of endometrium, for receptivity of the endometrium. Proper optimum level of vitamin D is required. ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम. This we have already touched. A few slides about osteoporosis. We have already discussed that bones are very, very important, especially in females. And there are some risk factors. Those people who do not move at all, who take steroids, who have some other illnesses which lead to osteoporosis. Osteoporosis risk factors. Being above 50, there is no female in this hall is above 50. Everybody is below 50. Being female, menopause, family history of osteoporosis, low body weight, small, thin, broken bones, or height loss. These are uncontrollable. There's controllable things. You can take enough calcium and vitamin D. If you're not eating properly, you can have a proper diet. Getting too much protein, sodium, and caffeine will reduce calcium and vitamin D level. You have to improve your lifestyle. You have to cut down smoking. And if your weight is more, you should have proper BMI. Weight should neither be less nor should be more. This is the scoring for osteoporosis, which you can go online, and there are various parts. You can do this FRAX scoring, which will tell you whether your bones are okay or not. And you have to do bone mineral density, or you have to do DEXA scan for osteoporosis. For gynecologists, you can do bone mineral density, you can do osteoporosis. You can download FRAX form from the computer and have it in the clinic. And if patient comes above 50, you would know that this patient is at risk of osteoporosis or not.
Malaise and fatigue during summers, temperature goes above 37, you lose a lot of calcium and vitamin D, make you sweat. ये वो चीज़ें जिनका और ये काफ़ी सारी चीज़ें जिनका मुझे खुद भी नहीं पता था और कॉन्फ्रेंसेस का ये फ़ायदा होता है। पहले मैं सोच रहा था कि मेरा टॉपिक रख दिया है कैल्शियम और विटामिन डी, तो इसमें क्या कुछ बोलना है, और बाद में मैंने देखा कि इसमें तो इतने रेफरेंसेस और इतने पॉइंट्स थे जिसमें it correlates endometrial thickness for implantation of the embryo. Optimum level of vitamin D is essential. Antral count when you start IVF or simple ART or any IU or simple, आपने कोई भी oocyte monitoring करनी है to see the antral count, proper vitamin D levels are important. Studies have shown that if vitamin D is deficient in a child, uterus will not grow up to proper size. There will be uterine hypoplasia, which I never knew before. I read it today. ऐसी बच्ची जिसकी 8-9 साल उम्र है और विटामिन डी डेफिशिएंट होगी, तो उसकी बाकी चीजें तो कैल्शियम विटामिन डी जो रिकेट फॉस्टिमुलेशन होती है, वो यूट्राइन साइज भी छोटा हो जाएगा और आगे इनफर्टिलिटी डेवलप होगी। यू हैव टू गिव हार्मोन्स ताकि यूट्राइन साइज प्रॉपर अचीव हो। Vitamin D has receptors on ovary, endometrium, myometrium. Still, it is under discussion and research is on that which level is proper for ovary, myometrium and endometrium. Endometriosis, treatment of ectopic endometriosis reduces inflammatory response. It reduces interleukin-1 and TNF and it treats endometriosis. लेकिन अगर लेवल इसका एक पॉइंट से बहुत ज्यादा हो जाए तो इट कैन कॉज हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेट्रियम आल्सो। सो ऑप्टिमम लेवल आर एसेंशियल। सो इट इज बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस आल्सो। एक और फीमेल्स के लिए स्लाइड है, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज विटामिन डी इंक्रीजेस एपोप्टोसिस। जो एक्स्ट्रा सेल ग्रो कर रहा है उसकी सेल डेथ प्रोग्रामिंग विटामिन डी से क्विकली हो जाती है। सो विटामिन डी, और ये ऊपर मेंशन हुई है स्टडी जो 2016 की है, देयर इज अ कैंसर रिसर्च सेंटर, उन्होंने स्टडी की दोज वुमेन हु वर टेकिंग विटामिन डी चांसेस ऑफ सी ब्रेस्ट वर लेस। इट इंप्रूव्स यूट्राइन रिसेप्टिविटी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आप व्हेन embryo enters, zygote enters into the endometrial cavity, endometrium has to be receptive. So receptivity depends upon thinning of the thickness of the endometrium. So vitamin D, it contributes to thickness of the endometrium और zygote का attachment का chance ज़्यादा होगा at the time of implantation. बाद में progesterone will take over. ये उस टाइम पे estrogen और progesterone का it creates a balance और implantation का चांस बढ़ जाएगा। ये how it controls endometriosis, cell proliferation, invasion, degradation and regulation of cytokines. So this process it treats endometriosis. Diabetes and vitamin D, low levels of vitamin D increase, इसको I've already touched. Vitamin D is essential for beta cells. Beta cells in islets of Langerhans. Vitamin D अगर low होगी तो they get killed earlier. Beta cells. Beta cells का apoptosis हो जाएगा and they become redundant. So optimum level of vitamin D is required to produce insulin. वो अगर कम होगा तो insulin की production कम हो जाएगी। Cardiovascular illnesses are increased. It inhibits vascular smooth muscle proliferation. Regulates renin-angiotensin system. Through renin-angiotensin, it controls blood pressure also and heart disease also, and it decreases the thickness of the blood. जो heart disease में जिनका blood thick होता है, हम एक layman term में कहते हैं, chances of cardiac disease are higher. ये उसको thin करता है, and of course it is anti-inflammatory, and that's why it reduces the chances of hypertension and heart disease. This is very, very important. Vitamin D and mental illnesses. Hyperactive mental disorders, vitamin D is deficient. Hyperactive mental disorders, depression,
और ये कोविड और डेंगू के बाद बहुत ज़्यादा आया, बहुत पेपर्स हैं, और उन्होंने कहा विटामिन डी डी देंगे अलॉन्ग विद ऑल मेडिसिन ये ट्रीट होगा। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, आपको याददाश्त आपकी कम हो जाएगी, स्किज़ोफ्रेनिया and plus multiple sclerosis. It aggravates the disease of multiple sclerosis. So these are 5 things which are very very prevalent. हमारे पास बहुत ज़्यादा patients multiple sclerosis के आजकल आ रहे हैं, और GB syndrome बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है जो पहले नहीं था, और उन जितने पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, in all those patients levels of calcium and vitamin D are less. Both are less. Vitamin D and calcium in GB syndrome and in multiple sclerosis. ये में भी I don't know gynecologist को देख रहे नहीं देख रहे, लेकिन as principal I have to sanction some medicines which are very expensive, और हम उनके जो different levels कर रहे हैं तो वो level उनमें definitely कम आ रहा है. This was totally new thing, was GB syndrome और multiple sclerosis, COVID और dengue तो बहुत ज़्यादा common हो चुका है. This is the mechanism how immunomodulation, और ये brain में क्यों हो रहा है? This is autoimmune illness which is created and deficiency of vitamin D has role in it. और ये वो immunomodulation की slide है which is जो brain में act कर रही है. एक immunomodulation दूसरी है जो आपके lungs के लिए और दूसरी immunity के लिए. This is autoimmune phenomenon which is going on in the brain which leads to depressive disorders, excessive hyperactive disorders, schizophrenia, suicidal tendencies, and multiple sclerosis and GB syndromes. ये वो autoimmune immunomodulation जो deficient हो जाती है because of deficiency of vitamin D. और ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए totally new थी, हम चीज़ें देख ही रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इतना डेप्थ में और there are so many papers on it, and I think इतना बड़ा एक क्राउड आज बैठा है, we should get together and हर जो फैमिली फिजिशियन है मेरे ख्याल है एक टॉपिक ले लें और उसके साथ सारे मिलकर कंट्रीब्यूट करें, और उसकी हम एक लेट्स स्टार्ट रजिस्ट्री टुडे. तारिक मियाँ साहब की अंडर सुपरविजन और सईद साहब की आज एक रजिस्ट्री शुरू करें विटामिन डी डेफिशिएंसी की, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस डे. और मेरा ख्याल है ये एक फर्स्ट स्टेप होगा. इसको GSK को हम कहेंगे कि वो रजिस्ट्री मेंटेन करें, और वो एक 5-6 लोगों का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, and we can write down certain points. और इनके जो pharmaceutical के field managers होंगे, they will go to all the consultants and let's come up with a good study, because पाकिस्तान में भी vitamin D की तो स्टडी है. हमने एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कोविड में की थी, जिसमें वो हमारी एक स्टडी ईरान में पब्लिश हुई थी इंटरनेशनल जर्नल में, लेकिन बाकी टॉपिक्स पाकिस्तान में भी डिस्कस नहीं हुए. और मुझे 2 मिनट देते हैं डॉक्टर आयशा मुझे इशारे करेंगे. तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ आपके सेशन की. सो आप लोगों के लिए जो जीपीज बैठे हैं, फैमिली फिजिशियन जो गायनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज का चांस ज़्यादा है इफ विटामिन डी डेफिशिएंट, प्री एक्लिम्शिया का चांस ज़्यादा है, और IUGR का चांस ज़्यादा है. इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोलोरेक्टल कैंसर, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं जो विटामिन डी से ट्रीट होती है. एस्थमा भी प्रोटेक्ट होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. एंडोमेट्रियोसिस से पिक्चर आ गई, और ये 4 पॉइंट्स हैं जिनसे एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट होता है विद विटामिन डी. साइटोकाइन्स, जीन एक्सप्रेशन, सिग्नलिंग पाथवेज, इंसिडेंट सेवेरिटी. और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, विटामिन डी कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट लॉस. जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ जाएगा. मेरा कोविड से पहले 192 पाउंड्स था. इन कोविड आई लॉस्ट 25 पाउंड्स इन 1 मंथ, और मेरा वेट हो गया 168, और वो बढ़ नहीं रहा था. मैं जो there was muscle and fat breakdown. My diet was absolutely okay. I lost 25 pounds in COVID, and now I am again 183. I have gained, I think, 20 pounds. That's all about it.